Hello, my dear students. Welcome to my channel. Myself, Taggy Krish, and जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ न कुछ वीडियोस लाते रहता हूं, तो इस बार जो है मैं लेकर के आया हूं आपके लिए स्टैक। जैसा कि सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता रहता है कि एक स्टैक आपको दिया जाएगा और उसमें जो है डेटा दिया जाएगा, और नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टैक केवल स्टैक ही प्रोग्राम जो है आपके सीबीएसई में आता है। और उस स्टैक में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑपरेशंस एक यूज़र परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मैं पाइथन में आपको एक प्रोग्राम भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी को पुश कर सकते हैं, डिक्शनरी के आइटम्स को पुश कर सकते हैं या पॉप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी डिक्शनरी के ऊपर। सो स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग डिक्शनरी। बेसिकली व्हाट इज स्टैक? स्टैक होता क्या है, और स्टैक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज स्टैक। Basically, if you see the stack or the pile of the plates, pile of the books, pile of the coins, so the thing which is placed one on top of the other is known as basically the stack structure. So over here, if you see, this is the stack of plate, and this is the stack of books, and this is the stack of coins. So this creates the stack. Okay. So as per definition, a stack can be defined as the linear data structure with the mechanism where items in the system are placed one on top of the other and processed on last in first out basis. This is the theme, last in first out basis, or you can say the LIFO. So what happens in a stack, that the item placed in the last will immediately be available for processing. So there are mainly two or three operations, but out of these operations, main operations are push, pop, and you can say display. There is another function called peek, but it is hardly used in the program. So we'll have to concentrate on push, pop, and display only. Okay. For example, if you see this scene, element stack can be processed from one and only, as you know, because we have to put the element one on top of the other. So if you want to uh, put the element or insert the element, you will have to use a term push function, and if you want to remove the element, then you will have to use function pop. So when you suppose there are three elements like 18, 25, 15, and if you want to push the item. For example, this is a function, and if you want to push the item, suppose I want to push 18 uh, to the stack, so this will be inserted here. So this is called push 18. Then suppose next time you want to push another element, maybe say 15. So 15 will go here, 15, and now if you want to insert any other element called 25, so it will be push on this location. So here 25 will be inserted. So this element 25
will be regarded as the top element, and the index of the top is 2 here. Okay, so first element inserted, that is pushed, that is 18. The second element pushed is 15, that is on index number 1. The third element pushed, index number 2. So now the top element is 25, and when you ask for peak, peak means the top of this stack. So in the peak case, if you want to get the peak of this stack, you'll get 25. And if nothing is there in this stack, means the stack is empty, this condition is known as empty stack. Or if you are going to delete the element or pop the element from this stack, and if there is no element, this is called the underflow condition. And overflow condition, when the stack is full, or there is no space to enter or to push the element in the stack, this is called the overflow condition. Like किसी बर्तन में पानी अगर भरते जाएं और उसमें जो है लगातार पानी भरते जाए, तो एक लिमिट आती है जिसमें कि पानी जो है बाहर गिरना गिरना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ओवरफ्लो कंडीशन। ऐसे ही उस पार्ट से जो अगर आप जो है पानी निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और वहां पर कोई वाटर है ही नहीं, और उस आगे स्टिल उसको जो है आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंडीशन आपकी कहलाएगी आपकी अंडरफ्लो कंडीशन। सो जब आप स्टैक एम्प्टी है उसके बाद भी उसमें से एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, दैट कंडीशन इज नॉन एज अंडरफ्लो। एंड द कंडीशन और द स्टेट जहां आपकी आपका स्टैक फुल हो चुका है, स्टिल आप चाहते हैं कि उसमें से कोई भी एलिमेंट पुश किया जाए जबकि वहां जगह ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो उसको जूडिशियसली चेक करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ पुश एंड पॉप। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ निकालने होंगे, अगर ये एलिमेंट्स मुझे निकालने होंगे, सपोज करो मैं पुश की बात पॉप की बात करता हूँ, पुश मैंने बता दिया, पॉप की बात करता हूँ। पॉप का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से ये एलिमेंट हटाना है। अगर मैं पॉप की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ पॉप, पॉप इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू रिमूव द टॉप एलिमेंट, दैट इज 25, यहाँ से चला जाएगा। And now this time uh, the peak element will be 25. Peak element, sorry, will be 15. After pop 25, you'll get the next top element, which will be 15. So here, push you have understood, peak you have understood, and pop you have understood. Now we are going to, or we are coming to ideally, so that we can create our program. Okay. तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी ले लिया है, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये दिस इज अ डिक्शनरी, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो क्वेश्चन इज हियर, दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि जूली हैज क्रिएटेड अ डिक्शनरी containing names and marks as key value pairs of 6 students. Write a program with separate user defined functions to perform the following operation. पहला ऑपरेशन क्या है? पुश द कीज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो ये डिक्शनरी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो नेम्स हैं, दीज आर नोन एज द कीज। ओके, तो ये आपकी कीज हैं, और जो उसकी जो वैल्यूज हैं वो हैं उसके मार्क्स।
So Om is the key, Jay is the key, Bob is the key, Ali is the key, and 65 is the value, Anu is the key, and 90 is the value, Tom is the key, 82 is the value. So हमें करना क्या है कि इसको हमने पुश करना है, पुश ऐसे करना है कि जो जिन कीज की जो वैल्यूज हैं वो 75% से ज़्यादा है, इट शुड बी स्टैक्ड, और उससे छोटी हैं तो उसको हमने स्टैक नहीं करना है, और बाद में जो हमें उस स्टैक में से वैल्यूज को पॉप करना है और उसको डिस्प्ले कराना है. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. सो चलते हैं, बनाते हैं अपनी आईडीई में प्रोग्राम और करते हैं स्टैक ऑपरेशंस परफॉर्म. तो स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं अपने आईडीएलए में और वहां पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए मैंने वहां पर ऑलरेडी आपको ये दे दिया कि जो आईडीएलए है इसके अंदर हमने डिक्शनरी बना ली है, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास ये ओम, जय, बॉब, अली, अनु, टॉम आर द कीज, एंड 76, 45, 89 ये जो हैं इसकी वैल्यूज हैं, ये मार्क्स हैं. अब हमें ये देखना है कि हमें क्रिएट करना है डिफाइन फंक्शंस. तो मैं यहाँ ले रहा हूँ डेफ फंक्शन का नाम पुश, और यहाँ पर जो मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट है वो मैं लेता हूँ से स्टैक, और उसके साथ में क्योंकि मैं जो वैल्यू पुश करना चाहता हूँ वो वैल्यू है आपकी आइटम. सो हियर दिस इज, एंड सिंपली आई जस्ट से स्टैक append and here item. यहाँ पर ये आइटम जो है आपका स्टैक में पुश हो गया. देन अब देखते हैं डिफाइन पॉप. पॉप इज अ फंक्शन, और किस एलिमेंट को आप पॉप करना चाहते हैं वो भी मैं यहाँ पर स्टैक ले लेता हूँ. एंड यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर item is equal to stack dot pop. This is pop is a function which removes the element from the and or top of the element or top of the stack. So when you say stack dot pop, अगर आप stack dot pop यहाँ पर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ये अगर एलिमेंट आपका जो भी होगा वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर मैंने डाला है ओम, पहला एलिमेंट है ओम. ये अगर सपोज बाय कंडीशन यहाँ पर आता है तो पॉप का मतलब है कि ओम यहाँ से आउट हो जाएगा. ये कहलाएगा आपका ओके. और उसके साथ ही साथ अगर ये जो आपने पॉप किया है आइटम, if your stack is not empty, then return item. Else return, मैं चाहता हूँ कुछ भी रिटर्न ना हो, अगर स्टैक एम्प्टी है तो कुछ भी रिटर्न ना हो. सो इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन इट विल रिटर्न आइटम जो कि पॉप किया है, अदरवाइज इट विल रिटर्न नन. तो ये दो फंक्शंस हमने करने थे. अब हमें करना है क्या,
पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक स्टैक लिस्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू मैनेज स्टैक इन द लिस्ट. ओके, सो दिस इज अ स्टैक एंड फिर हम चला रहे हैं फॉर आई इन आर, यानी आई एम गोइंग टू रीड the entire dictionary. So here I will read the keys, and whatever I is there is corresponding a value will also be given in dictionary. So क्या हमारे क्वेश्चन ये है कि जिस की जो वैल्यू मुझे, वो कीज जिनकी जो मार्क्स हैं वो 75% से ऊपर हैं, वो हमें स्टैक करने हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो चेक करनी पड़ेगी कि आई क्या है पहली बार, बिकॉज आई इज रीडिंग फ्रॉम डिक्शनरी. So when you read I, the first read is Om, and second I is Jay, and third I is Bob, and fourth I is Ali, and so on. So the value will be fetched using R of I. If this is greater than equals to 75, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओम जो पहली की है, इस की जो वैल्यू है 76 है, विच इज ग्रेटर देन 76. तो यहाँ पर इस चीज को आप गौर करिएगा कि जो आपकी की है 75, तो इसका मतलब है ओम इज ग्रेटर देन 75, एंड दैट इज व्हाई 75 ओम इज इंसर्टेड इन द स्टैक. ओके, और उसके साथ ही साथ अगर ये सही हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू होगी जय जय, विच इज whose value is not greater than 75, so it will not be stacked. And the third is Bob, and Bob की जो वैल्यू है, Bob की वैल्यू जो है 89 है, so Bob will also be stacked here. तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका पहले ओम जाएगा, देन बॉब जाएगा, उसके बाद उसके टॉप पर अनु आ जाएगा, अनु, और बाद में सबसे टॉप पर आ जाएगा आपका टॉम. सो ये आपका स्टैक बनेगा. राइट, तो यहाँ पर जो हमने ये दे दिया है, कंडीशन हमारी चेक हो गई है. कंडीशन चेक होने के बाद अब मुझे क्या करना है, कॉल करना है पुश. पुश क्या क्या चाहिए इसके साथ में, आपकी स्टैक जाएगी और उसके साथ में जो है आपका की जाएगा. ये पहला हो गया. देन ये हो गया पुश. ओके, अब पुश के बाद मुझे इसको पॉप करना है और डिस्प्ले कराना है. तो डिस्प्ले चलाओ करते हैं वाइल ट्रू, बिकॉज वी आर गोइंग टू पॉप इट. एंड यहां से मैं लेता हूं प्रिंट पॉप स्टैक pop stack comma and print
आप स्टैक इफ वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद अगर आप चाहें तो stack is empty while true if stack is empty, then break. सो चेक करके देखते हैं क्या होता है इसमें। रन। सो दिस इज टॉम, अनु एंड बॉब। ये आपके नन नन वाई नन वाई नन for I in R if R greater than 75, then push up an item y true, then यहाँ पर आपका जाता है if नन होकर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम एक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, if this then return none else return stack dot pop। let me see कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई। run undo something is if stack not null then return item। else return none। तो ये आपका परफेक्ट आ गया, बिकॉज पहले आपका जो जाना था वो जाना था, अगर देखा जाए तो पहले ओम जाएगा, फिर ओम के बाद 89 यानी बॉब जाएगा, और बॉब के बाद जाएगा 90, और 90 के बाद जाएगा टॉम। तो जब निकलेगा तो पहले टॉम निकलेगा, क्योंकि जब पॉप करेंगे तो पहले टॉम यानी टॉप से निकलेगा। टॉम, then Anu, then Bob, and your Om. So this is the output. Hope this is clear to you. So this is the program. It, it can help you to read the entire dictionary and pop the element from the stack. Any you can read the dictionary and push the element on the basis of the condition given, and finally you can pop the elements from the stack. And there are only two functions. Number one is push, and number two is pop. So CBC usually gives only these two operations, but I'm not saying this is for sure that only two operations will come. You will be asked for display, you will be asked for peak also. So there are four functions, you can use them. So practice it. So
meet in the next video with some other program. तो अगर आपने मेरा प्रोग्राम अभी तक अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ये प्रोग्राम अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें सो दैट वो भी इस चीज़ से अवगत हो जाएं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।